Good morning, welcome to our YouTube channel. Today we're gonna talk about engine oil in coolant reservoir. The common causes are bad engine oil cooler, bad EGR cooler, bad air compressor, blown head gasket, cracked piston sleeve. Now we're gonna talk in detail about each and every cause. The very first thing is to confirm if we have a bad engine oil cooler. It's the very common cause for mixing of engine oil in coolant. We can check it by doing a pressure test. We're gonna remove the engine oil cooler and perform a pressure test to check if it's leaking or not. Sometimes it only leaks at very high temperature because metal shrinks when it's hot. It makes small holes in the oil cooler which leads it to leak. If our oil cooler looks fine, then the next cause could be our EGR cooler. Its function is to cool our exhaust gas for recirculation into the block. To check if we have a bad EGR cooler, we have to follow some steps. First of all, we need to see if our vehicle is showing white smoke. After, we need to do a follow-up about coolant level of vehicle. If we need to fill up our coolant reservoir often, then our EGR cooler may be leaking internally. After, we have to remove EGR cooler and look for charcoal kind of stuff in it as shown in photo. If you see any of these symptoms, then it's sure that you have a bad EGR cooler on the vehicle. But if you don't find any of these symptoms, then we're gonna go to the next possible cause: mixing issues. Because the coolant helps the air compressor to maintain its temperature and the engine oil is used for lubrication of air compressor. So the gasket failures can cause the issue. But I am here to help you out to inspect the air compressor. The very first thing we should do is monitor the air pressure and check if it's building proper air pressure. If it's making proper air pressure, then we need to drain the air tanks and trying to find coolant in it. After that, we're gonna check the temperature of air compressor, see if it's getting hot, that it's normal temperature. If you find any of these symptoms, then it's sure that you have to change the air compressor to fix the issue. But if you don't find any symptoms till now, that means there is a major issue with the engine, which is blown head gasket. To fix it, we need to pull the head and replace the head gasket. There are very easy ways to find out if the head gasket is blown or not. For that, we need to check if the vehicle was ever heated up and driven for a long time while it was at high temperature, or if the vehicle was driven with broken fan or water pump belt, or if the vehicle was driven with a major coolant leak. If the answer for any of the questions is yes, then the chances are your vehicle's head gasket is blown. The next major cause could be cracked piston sleeve. It depends on life and mileage of the vehicle. If the vehicle is too old or the owner is adding water instead of coolant, it leads to crack the sleeve. टूट गई है तो उसे हमें ये चलाना नहीं है। अगर हम इसे चलाएंगे तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा और
इसकी रिपेयर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। हमारे ट्रक का इंजन ऑयल और कूलेंट मिक्स होने लग पड़ता है, तो इसका मेन कारण यही होता है, डिपेंड करता है हमारे ट्रक की एज कितनी है और या फिर किलोमीटर कितने चलाया है ट्रक, तो उसकी वजह से ये करोजन लगता है और इसी के कारण हमारा वो ख़राब हो जाता है। और या फिर अगर हमारा ट्रक बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो गया, वो भी स्लीव को कमज़ोर कर देती है। और एक और प्रॉब्लम है, जब हम ऑयल चेंज टाइम पे नहीं करवाते तब भी ये प्रॉब्लम आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि ये ट्रक के लिए जो ऑयल होता है ये मेन खाने का काम करता है। अगर हम अपने शरीर को खाना ही नहीं बढ़िया देंगे तो वो काम क्या करेगा। और नेक्स्ट ये है, अगर हमारा ऑयल कूलेंट में कभी भी मिक्स हो रहा है थोड़ी सी क्वांटिटी में, वो हमने कभी इग्नोर नहीं करना। कभी हम क्या करते हैं, ये हम इग्नोर कर देते हैं और धीरे धीरे वो लीक ज़्यादा बड़ा हो जाता है और प्रॉब्लम मेजर आ जाती है। अगर हम स्टार्टिंग में चेक करें, हो सकता है ये माइनर प्रॉब्लम हो और कम पैसे लग के ठीक हो जाए। अगर हम इसे इग्नोर कर देते हैं और इसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है और कभी हमें ये ट्रक अपना स्क्रैप करना पड़ता है, क्योंकि जो इंजन रीबिल्ट है, स्लीव का काम है, हेड का काम है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और ये हमारे बजट से बाहर हो जाते हैं। सो ट्राई करें, जो भी रिपेयर है टाइम पर करवाएं और कम पैसे में करवाएं। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, डिसीजन लेने में कोई हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट्स। और हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे से भी आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आते रहें और आप सबकी हेल्प करने में हमारी कोशिश जारी रहे। थैंक यू।